this is me Nasrullah Khan. I welcome you today in today's lecture where we would be touching upon the most important aspect of business communication, one of the mode of communication that takes place in our day-to-day business, in our day-to-day practices in the organization, be it industry, corporate sector or academia. We need to know the importance of this particular mode of communication that we are going to discuss. Yes, of course, I am talking about business letter writing. बिजनेस लेटर राइटिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जब आप अपने डे टू डे प्रैक्टिसेस में कोई भी करस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशंस और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आपको जरूरत पड़ती है एक लेटर की, आपको जरूरत पड़ती है करस्पॉन्डेंस करने के लिए एक टूल की जिसको हम नाम देते हैं बिजनेस लेटर राइटिंग। तो आज के लेक्चर में हम टिप्स और ट्रिक्स कैसे इसको ड्राफ्ट करते हैं, कैसे इसके इंग्रेडिएंट्स हम सीक्वेंस वाइज एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह हम चीजों को अलाइन करते हैं अपने लेटर के अंदर, जहां पर हमें आसानी हो ये काम करने के लिए कि किस तरह लेटर को हम प्रेजेंटेबल और एक्सेप्टेबल बना सकते हैं अपने ऑडियंस के लिए। Now, the question is that when and why do we write business letters? हम कब और किस वक्त और क्यों हम लिखते हैं बिजनेस लेटर्स? बिजनेस लेटर्स एज द नेम सजेस्ट कि ये एक बिजनेस पर्पस के लिए लिखा जाता है। लेटर्स की बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। हियर वी आर फोकसिंग ऑन द बिजनेस लेटर्स व्हिच इज रिटन सोलली फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ जॉब डन। बिजनेस लेटर्स डिफरेंट सिचुएशन के लिए हो सकती है कि अगर आप एक अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई आपका क्लाइंट है, कोई भी आपका कस्टमर है, एक वेंडर है जिससे आप कोई रिक्विजिशंस मांगना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स यू राइट अ बिजनेस लेटर। आपको किसी भी एक मीटिंग रिक्वेस्ट करनी है फॉर अ बिजनेस मीटिंग, आपको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है किसी भी सीईओ और किसी भी टॉप नॉच personality ko, for that reason of course we write business letters, either to inform, to request someone, to persuade someone or to get a job done. We write business letters for these all purposes. If we look at the broader picture of letters writing, it is broadly divided into two basic types which are considered as formal and informal writing. However, when we look into the formal and informal, the reason a letter is formal or informal because of the nature of the audience, because of the tone of that particular letter, because of the selection of the words and structures that you adopt in the letter writing. तो आपका letter अगर formal है तो of course वो formal इसलिए है कि आपका audience उसको formal बनाता है। आपका audience decide करता है कि whether the letter would be formal or इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मल लेटर्स यूजुअली बिजनेस अरीनाज में लिखा जाता है। फॉर इंस्टेंस, आपको अगर कोई भी कोई B2B एक कम्युनिकेशन और करस्पॉन्डेंस करनी है तो यू राइट अ बिजनेस लेटर। आप अगर एक किसी एकेडेमिया में है, यूनिवर्सिटी में है, पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स यू राइट अ लेटर व्हिच कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस लेटर बट दैट इज वन ऑफ द फॉर्मल लेटर जो आप लिखते हैं। तो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन हो सकता है, लेटर ऑफ टर्मिनेशन हो सकता है, लेटर ऑफ acknowledgement हो सकता है। There's a long list that we would be talking about. Informal letter on the other hand, ये हम लिखते हैं अपने दोस्तों और हल्का अहबाब में जो लोग होते हैं उनके लिए हम बिजनेस अगर लेटर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये इनफॉर्मल लेटर है। यस, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर को जानने के बाद आज का हमारा जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, जो हम जिस पर बात करेंगे डिटेल में, वो है बिजनेस लेटर राइटिंग, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे साथियों को और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनको जरूरत पड़ती है यूनिवर्सिटी में, इंडस्ट्री में और कहीं पे भी अगर वो जॉब कर रहे हो या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ऑफ कोर्स उनको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। The question is, since day one we have been writing letters. एक क्वेश्चन आता है कि what are the ingredients of the letter? ऐसी क्या बातें हैं जो कि हम अपने लेटर में ऐड करें तो कि ताकि वो एक एक्सेप्टेबल लेटर बन जाए ऑडियंस के लिए। ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो अपने लेटर में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो दैट लेटर बिकम्स द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन फॉर द ऑडियंस दैट वी आर टारगेटिंग। दैट इज द पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर। यस, the points I'm raising here or identifying here on the screen you are able to see कि ये वो points हैं जो कि आपके लेटर को बहुत ही एक टॉप नॉच और एक एक्सेप्टेबल लेटर बनाता है। आपके जो भी ऑडियंस हो
उनके लिए। क्यों? क्योंकि तमाम तर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एक लेटर की जो लिखी जा सकती हैं एक लेटर में, जो कि बहुत ही अटमोस्ट जरूरत होती है ऑडियंस की, वो सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ द लेटर्स जो कि हम डिफरेंट नेचर या डिफरेंट नेचर ऑफ ऑडियंस को हम फेस कर रहे होते हैं। तो वी हैव नाउ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस फॉर व्हिच वी राइट लेटर्स। लेटर लिखे जा सकते हैं कि जब आप कहीं मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो और आपको सेल्स की बातें करनी हो, वी राइट लेटर फॉर दैट। लेटर could be a complaint letter, adjustment letter for a product that you have bought. एक रिफ्यूजल लेटर हो सकता है फॉर इंस्टेंस, और आप एट टाइम्स कभी कभी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के लिए आपको कवर लेटर लिखना होता है जो रेज्यूमे के साथ अटैच करते हैं, विच इज कंसीडर्ड एज अ चेरी ऑन द केक और एन एडिशनल डॉक्यूमेंट टू सबमिट फॉर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। तो ये अच्छा जाना और समझा जाता है। Cover letter is one of the type. Request letter, if you are requesting for maybe arranging a meeting to the another business correspondents, of course we write business letters. So these are the types that you can see on the screen कि हम इस nature की correspondence कर रहे होते हैं different audience के साथ और different organizations के साथ। Now moving forward down the line, हम ingredients की बात कर रहे थे, जो मैं इससे पहले बात कर रहा था कि हम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपने लेटर में अगर हम ऐड करते हैं तो उससे हमारे लेटर की अहमियत और वक़्त बढ़ जाती है। That's the point, of course. Starting from the return address. Return address here means simply the sender's address, जो letter भेज रहा है किसी को, that address is required there. The complete address is needed. Date की जहां तक हम उसके बाद बात करें तो date usually उसके फॉर्मेट्स डिफरेंट हैं और स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हम यूज करें। तो to make it easy for the students, बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट है कि just write down the name of the month first, then day and then year, जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है और नजर आ रहा है। उसके बाद आ जाता है इनसाइड एड्रेस की बात, जो कि रिसीव कर रहा है उस पर्टिकुलर लेटर को। यू मेंशन हिज और हर नेम एंड डिजिग्नेशन इफ नीड बी, और प्रॉपर एड्रेस इज रिटन देयर। जहां तक बात है सब्जेक्ट लाइन की, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द मोस्ट, आई वुड से, the top-notch idea that one can have to just pen craft your letter, that is considered subject line. Subject line बहुत ही precise, specific और comprehensive होना चाहिए, जो कि ये बताए कि इस लेटर में असल में आप बात क्या करना चाह रहे हैं। ना वो इतना लंबा होना चाहिए कि बिल्कुल इसी के अंदर ऑडियंस खो जाए, ना वो इतना शॉर्ट होना चाहिए कि उसकी मीनिंग बिल्कुल ही कहीं खो जाए और समझ में ना आए कि इस पर्टिकुलर लेटर में बात क्या की जा रही है। That is the point I am raising here. तो subject line is something, subject line पर हमारा एक अलग different lecture है, इस पर डिटेल से बात करेंगे कि these are the types of subjects that we need to adopt and these are the type of subjects that we should avoid writing. After subjects, it's come to salutation, to just salute someone else, the opening part of your letter. Salutation could vary from audience to audience. एक ऑडियंस से दूसरे ऑडियंस पे ऑफ कोर्स वेरी कर सकती है, और ये ग्रीटिंग होती है जो आप अपने रिसीवर को देते हैं और एक ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए। बात अगर हम करें उसके बाद सैल्यूटेशन की बॉडी ऑफ कोर्स ये भी डिपेंड करती है कि किस नेचर का लेटर आप लिख रहे हैं। कुछ लेटर्स होते हैं जिसकी बॉडी शॉर्ट हो सकती है, किसी की 3 और 4 पैराग्राफ्स पे डिवाइड हो सकती है। इट इज totally depends on the nature of letter that you are writing. लेटर ऑफ द बॉडी पे हमारा पूरा एक सेपरेट लेक्चर है जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो आपको बताएगा डिटेल में कि बॉडी में इंट्रोडक्शन एंड द सेकंड पैराग्राफ एंड द थर्ड पैराग्राफ, हाउ यू नीड टू स्टार्ट एंड एंड इट अप। नाउ अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग की बात करें, नाउ यू आर साइनिंग ऑफ from your letter, so of course you have some words, some catchy words that you use, sincerely yours, and there is a long list of that. Of course you'll be able to see that, so that is something we usually have. कीड नेम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक एड्रेस होता है जो कि सिग्नेचर होता है जो सेंडर के नाम के साथ वहां सिंपली लिखा जाता है। और हैंड रिटन सिग्नेचर, एट टाइम्स व्हेन यू राइट योर लेटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट कि यू गेट इट प्रिंटेड एंड देन साइन इट बाय योरसेल्फ। तो मैनुअली हैंड रिटन सिग्नेचर इज इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में और लीगली आप इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। अगर एक लेटर पे आपका सिग्नेचर नहीं है, ऑफ कोर्स यू हैवंट रिटन इट एंड दिस डज नॉट बिलोंग टू you. So signature, handwritten signature is something
very important for that. बात अगर हम करें टाइपिस्ट इनिशियल की, और यहाँ एक और टर्म आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पर प्रोक्यूरेशनम, जो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन अभी कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम करती है, और मे भी ये कुछ लोगों के लिए बड़ा एक नया टर्म होगा. ये लॉ में यूज होता है यूजुअली. लीगली आप अगर किसी चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, कि जब आप किसी की जगह कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, तो ये टर्म्स हम उसके लिए यूज करते हैं कि लेटर जो है वो लिखा किसी और ने है, साइन आप कर रहे हैं, तो दैट इज द पॉइंट वी यूज सच टर्म्स. इनक्लोजर्स की बात करें, अगर हम सीसी और की बात करें, तो इनक्लोजर्स आर द अटैचमेंट्स दैट यू यूजुअली हैव विद योर लेटर, कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं, उसको हम सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के नाम, कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ इट इज अ कवर लेटर, यू जस्ट राइट इट डाउन विद दैट कि रेज्यूमे हैज बीन अटैच्ड मे बी, और अ रेफरेंस लेटर हैज बीन अटैच्ड मे बी. सो दिस इज हाउ वी यूजुअली यूज इनक्लोजर. और सीसी में ये लेटर किन किन लोगों को आप सेंड कर रहे हैं, उनके नाम, डिपार्टमेंट्स के नाम हम यूजुअली मेंशन करते हैं, और इस तरह हम अपने लेटर के फॉर्मेटिंग को और इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करते हैं. आई बिलीव कि आप जितने भी यहां पर मैंने इंग्रेडिएंट्स एक्सप्लेन किए हैं, these 11 ingredients of your letter, they are the most important one that you need to be concerned about. Now, moving down the line to roll the ball towards the next part, which is how to format your letter. Students के अंदर ये बड़ी confusion होती है, be it undergrad, graduate, postgraduate students or professionals, कि लेटर की फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, क्या हम फॉर्मेट अपनाएं, क्या हम सेंडर के ईमेल के एड्रेस को लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखें, सैल्यूटेशन को कहाँ लिखें, हम अपने जो साइनिंग ऑफ वर्ड्स हैं उसको कहाँ पर लिखें. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हमारे स्टूडेंट्स में और हमारे जो लर्नर्स होते हैं उसके अंदर इशू, उनको ये इशू उनको वो फेस करते हैं. तो इस इशू का एक ही सोल्यूशन है, बड़ा सिंपल सा, कि यू कैन सी 3 different formats on the screen. The first one is considered as semi block style, modified block style and full block style. I would strongly recommend to focus more on the block style, which is considered as the full block style format. Full block style format बड़ा simple सा है, जिसमें ये कहा जाता है कि keep everything on the left hand side of your letter, be it the sender address, the receiver address, or be it the salutation, the subject line, or the signing of words, or the date, everything on the left hand side. कोई भी चीज राइट हैंड साइड से स्टार्ट ना करें, लेफ्ट इंडेंटेड ना करें, पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले टैब का बटन ना दबाएं ताकि एक स्पेस क्रिएट हो. नो, just follow this format, which is globally and internationally acceptable and locally as well. Of course, एक term हम use करते हैं glocal, which is the combination of global and local, mean our culture and the international culture. So it is acceptable locally as well, which makes it easy for us to understand and focus more on the aspect. तो ये है फॉर्मेट जिसको हमने फॉलो करना है. ये है वो फॉर्मेट जो आप अपने एकेडेमिया में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज करते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू लुक एट द सैंपल लेटर रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, एवरीथिंग हैज बीन क्लियरली evident here, okay, how we can write the sender, the receiver address, the date, the correct date of your letter, how we can write the subject line which is acceptable, comprehensive, not choppy and more wordy. Salutation की बात करें तो how can we have a better salutation, और फिर body paragraph, and then of course signing off from the letter. This particular sample will help you out how you can draft. आप इस लेटर को अगर देखें, इसकी फॉर्मेटिंग को, तो सी द वे इट हैज बीन अलाइंड, इसके अंदर जो स्पेसिंग का ख्याल रखा गया है, स्पेसिंग इन बिटवीन द एड्रेस, द डेट, एंड देन अगेन अनदर एड्रेस, and then the subject line, the salutation, in between the paragraphs if you see the spacing, and in between the lines if you see the spacing. So in between the lines we strongly recommend that you keep single spacing, otherwise the spacing would help you out more in understanding it. Formatting की जब हम बात करें तो देखिए, letter is something very important. ये आपको represent करता है. You send a letter और ये आप इसको ओन करते हैं, आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है. दैट रिप्रेजेंटेशन शुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट रिप्रेजेंटेशन. ये आपको प्रेजेंट करता है, देयरफॉर इसको आपने इतना अच्छा ड्राफ्ट एंड क्राफ्ट करना है कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑडियंस पर एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन जनरेट कर दे. This is what we were talking about the letter writing. I hope today's lecture will be adding on something to your existing knowledge, और आप इससे लेटर राइटिंग के फॉर्मेटिंग और इसके स्टाइल और द वे वी ड्राफ्ट इट
हमने आज सीखा इसमें, और I hope that you'll be learning and flourishing yourself through these lectures. Thank you very much for watching this lecture, and keep subscribing and following, and keep liking our videos ताकि आपकी learning हो, आपकी nourishment हो, आपकी flourishment हो. Thank you very much for watching this lecture.